और अभी people are talking about कि how Pakistan was so upfront in preparing those pitches, और वो पंखे रखे हुए थे और वो हीटर रखे हुए थे. प्लीज, ये हर टीम होम एडवांटेज लेती है. ब्रेंडन मैकलम को कोई मसला नहीं है, बेन स्टोक्स को कोई मसला नहीं है. तो आई डोंट नो व्हाई वी आर बीइंग apologetic about preparing those pitches. Normalize winning at home. Don't be surprised by how you won. Normalize it. Normalize the fact that every team is good at home. But it will be, the narrative will be reduced to the fact कि यार एकदम पाकिस्तान ने पता नहीं कहाँ से ये आ गए और कहाँ से जीत गए. And that's the problem with Pakistan cricket narrative. Basically, New Zealand के लिए ये करना, and also don't forget कि their best batter wasn't playing in the series, and then also the fact that their captain had just stepped down. So it's a huge achievement. Hi guys, welcome to another episode of Sporting Myths. Today you're joined with me, Ahmed Tariq, and Rehan and Waleed as always. मैं शुरू करना चाहता हूँ, मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुबारक देना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों को मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मुद्दतों के बाद एक टेस्ट सीरीज जीत गया है. We're all ecstatic, we're all jittery. हमें नहीं पता कि हम लोगों के अंदर कितनी चीज़ें इस वक्त, कितनी किस्म की खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम कल से सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. And it's really, it sucked कि हम पहले नहीं record कर सके episode, but we finally managed to get together in the same place, and now we're taking this out right now. And there's a follow-up to this because रेहान इस वक्त थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशन में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो जीत गया, फिट हो गया, बेहतरीन, बट जितना वो भाई एल क्लासिको के लिए कल रात को पंप थे, वो उतना ही बैकफायर कर गया. बिकॉज 55 मिनट पे जब बार्सिलोना ने गोल मारा तो रेहान ने मुझे मैसेज किया था, Madrid are going to win this because Barcelona have now scored before the 60th minute. And अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, हमारा इंशाल्लाह कल एक एपिसोड आएगा फुटबॉल राउंडअप के ऊपर. यू कैन फॉलो दैट एंड लर्न व्हाट आर द डिटेल्स. बट अभी रेहान हमें कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा थोड़ा जिंदगी के अंदर. हम इस वक्त फुटबॉल को साइड पर रखते हैं, क्रिकेट पे आते हैं. कैसा महसूस कर रहे हैं बॉयज? मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा वॉच आवर्स बढ़ जाएं, तो इसलिए प्लीज़ वो हम एपिसोड के एंड के अंदर इंडिया एंड न्यूजीलैंड की सीरीज भी डिस्कस करेंगे. दूसरा यार देखो, मेरी बात सुनो, फुटबॉल हम क्यों फुटबॉल देखते हैं? इट्स देयर इज नो पॉइंट. ठीक है, सिर्फ क्रिकेट की बात करें, एंजॉय करें. पाकिस्तान सीरीज जीता है. मुझे नहीं पता क्लासिको में क्या हुआ, आई डोंट केयर अबाउट इट. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद. और that's all I have to say for now, and over to Waleed's evil smile. Yeah, no, you're throwing it to me too early. I was hoping to make a record, so this time it's only 2 minutes. We're very happy, I think. इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती भी थी before going off on a few tough tours overseas. I think like जो roller coaster of emotions है इस series में, I think that truly encapsulates Pakistan cricket. जिस तरह अहमद तारिक के फेवरेट कमेंटेटर स्लैश एक्स प्लेयर नसीर हुसैन कहते हैं 1 minute down, next minute up. तो दिस सीरीज, आई मीन, किसी को भी प्रॉब्ली ये नजर नहीं आ रहा था एक्सेप्ट जो नजूमी रेहान भाई हैं ऑन व्हाट टू डू ऑन हाउ टू विन द सीरीज. From where they were mentally, where they were as a team, where they were as an organization, where everything was torn apart and selectors निकाल दिए, नहीं डाल दिए, team आती निकाल दी, नहीं डाल दिए, threw in people who had been on the short end for a long time into the match. For all of that to come together, for the magic of Sajid and Numan. Sometimes I accidentally think, whenever I think of them, वो Sajid और Zishan का गाना चलना शुरू होता है पीछे, fast car on a highway. But the way those two guys came in, Kamran Ghulam story, what Saud has done, and jo satisfaction mili in hearing Shan Masood on the final day, seeing him hit those boundaries and get us across the line, it was just ecstatic. बहुत मजा आया. And I think we could probably spend 3 hours talking about Sajid and Numan. So maybe let's try and cover that fantastic journey, maybe with a little bit of focus on test 3, because I think that it's like a movie star entry or blockbuster performance from those two. 100%. We'll
विल स्टार्ट विद हाईलाइटिंग कि हमने जो प्री सीजन की पहले बात की थी ना, लाइक प्री सीजन कह रहा हूँ, पहले जो प्री टेस्ट हमने अपना सबसे पहला एपिसोड निकाला था, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट बिकॉज हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर बैटिंग विकेट होगी तो पेल देंगे। एंड जो हमारी कल रात से स्टोरी वायरल हुई, द रील वायरल हुई भी है, रेहान यू कॉल्ड इट, कि अगर इनको मुश्किल देंगे तो सुराख है, देर आर होल्स टू बी एक्सप्लॉइटेड, देर आर थिंग्स दैट कैन इवन ब्रेक डाउन द ग्रेट इंग्लैंड साइड। एंड ये हमारे सामने फर्स्ट टेस्ट विन इन अ वाइल, फर्स्ट टेस्ट सीरीज विन इन अ वाइल, तो कैसे ये इतना हमने अचीवमेंट अनलॉक किया है। आई थिंक पहली चीज तो ये कि यूर बीइंग टू काइंड कॉलिंग देम अ ग्रेट इंग्लैंड टीम। आई थिंक ग्रेट टीम्स की अगर आप बात करें तो द वेस्ट इंडीज टीम ऑफ द 80s, पाकिस्तान एट होम इन द 80s, इंडिया ओवर द लास्ट 10 to 12 years, ऑस्ट्रेलिया in the late 90s and 2000s. Those are great test teams. This England team is a good team. और इनकी जो इश्यूज हैं वो हमें नजर भी आए, और दूसरा इट विल बी रिड्यूस्ड इवेंचुअली टू व्हाट वलीद सेड, द विक्ट्री विल बी रिड्यूस्ड टू दैट के पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट 1 minute डाउन नेक्स्ट मिनट अप, बट इट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू दैट। माय ओपिनियन इज कि अगर आप देखें तो ये लॉजिकल डिसीजन थी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि अगर आप इंग्लैंड को थोड़ी टफ बैटिंग पिचेस दें तो दे स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल इसलिए करते हैं बिकॉज दे विल प्ले ओनली वन वे, दे नो हाउ टू प्ले ओनली वन वे, और जब वो उस तरह खेलते हैं तो इन आउट फील्ड्स के ऊपर वो स्ट्रगल करते हैं। अगर बॉल थोड़ा लो रह रही हो तो स्ट्रगल करते हैं, अगर बॉल डिविएट करना शुरू करते हैं ऑफ द सरफेस फिर भी उनके लिए मुश्किल होता है, बिकॉज जब आप ऐसी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ट्रू बाउंस चाहिए होता है, बॉल्स कमिंग ऑन टू द बैट वो चाहिए होता है, आपको स्पिनर्स की इतनी मूवमेंट जो है वो सूट नहीं करती आपके बैटर्स को। तो द वन प्लेयर दैट डिड, लाइक मुझे लगता था कि एक प्लेयर इनमें से ऐसा है जो कि पाकिस्तान को ट्रबल कर सकता है, वॉज बेन डकेट अगेंस्ट स्पिन, because he plays the sweep, the Yeah, reverse, and all those shots really well. So once you got Ben Duckett out, तो पाकिस्तान के लिए obviously it was going to be easier. The class that these players have shown. साजिद एंड नुमान की हम बात कर रहे हैं, साजिद एंड नुमान की बात यह है कि आपने पहले लेबल कर दिया कि जी फिंगर स्पिनर्स हो ही नहीं सकते, फिंगर स्पिनर तो विकेट टेकिंग ऑप्शन तो होता ही लेग स्पिनर है, एंड फॉर अ वाइल यू पुट देम ऑन द साइड। देन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने yeah, फिंगर स्पिनर्स को माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी उसमें भी नुमान और को रावलपिंडी में खिलाया ऑन अ फ्लैट पिच वेयर नुमान गॉट टेकन अपार्ट, एंड उसके बाद आपने कहा कि जी ये तो बॉलर ही नहीं है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो जिस पिच पे खेल रहा था उस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भी मिला के 10 आउट नहीं किए 2 इनिंग्स के अंदर। तो दोज थिंग्स हैव टू बी yeah. टेकन इन टू अकाउंट। तो द वे दीज गाइस बोल्ड, ऑब्वियसली इसमें पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और अभी पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ पाकिस्तान वाज सो अप फ्रंट इन प्रिपेयरिंग दोस पिचेस, और वो पंखे रखे हुए थे और वो हीटर रखे हुए थे। प्लीज, ये हर टीम होम एडवांटेज लेती है, ब्रेंडन मकलम को कोई मसला नहीं है, बेन स्टोक्स को कोई मसला नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर बीइंग अपोलोजेटिक अबाउट प्रिपेयरिंग दोस पिचेस। ये हमने पहले ही बात की कि जब आप श्रीलंका जाके खेलते हैं तो उनके हर श्रीलंका की पिच के ऊपर उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक पैच बना होता है ऑलरेडी ऑन डे वन, वो पैच इज ऑलवेज देयर विच देन ट्रबल्स द ऑपोजिशन बैटर्स। तो आप अपने प्लेयर्स के लिए कंडीशंस करते हो जब आप होम पे खेल रहे हो, दूसरी टीम के लिए नहीं करते। तो नॉर्मलाइज विनिंग एट होम, don't be surprised by how you won, normalize it, normalize the fact कि every team is good at home। जब आप बाहर जाके खेलेंगे तो वो कोई आपको आपकी मर्जी की पिचेस बनाकर नहीं देंगे। जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वो कोई आपको बिल्कुल गंजी पिच नहीं बना के देंगे, वो ग्रास छोड़ेंगे। जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे वो भी ग्रास छोड़ेंगे। जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो आपको बाउंसी पिचेस देंगे। तो वो आपको कोई फेवर्स नहीं कर रहे। एंड द फ्लिप साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, आई ऑल्सो ट्वीटेड अबाउट इट, इज के, and also one of our ex-cricketers also mentioned this के how will Pakistan now manage on seaming pitches? या पिछले 3.5 साल में आपने सीमिंग पिचेस पे बड़े मैचेस जीत लिए थे। आई मीन दैट डज नॉट मेक एनी सेंस Oh. के सीमिंग पिचेस के ऊपर अब आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे। It's just doesn't make sense के where these narratives come from. Just be happy that you won at home, and credit to साजिद नुमान के 8-9 महीने बाद फर्स्ट क्लास में वो बॉलिंग करवा रहे हैं और उन्होंने Yeah, विकेट्स ली। नुमान जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और साजिद जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बात भी नहीं हो रही थी, अब वो दोनों आर सडनली इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एज वेल। And one thing I'd say yeah, to people is that a lot of times what happens in the background goes unnoticed. So Noman moved from Sindh to Lahore recently, and Noman's been bowling a lot at Ghani Glass की academy है यहाँ पर लाहौर में। तो वहाँ पर वो काफ़ी बॉलिंग कर रहे हैं और काफ़ी रेगुलरली खेल रहे हैं, अपनी बैटिंग पे भी काम कर रहे हैं। ही यूज्ड टू बी अ रियली डिसेंट बैटर
एंड इस सीरीज के अंदर दोबारा, बिकॉज ही इज बीन वर्किंग सो हार्ड बिहाइंड द सीन्स इधर लाहौर गनी क्लास आके, तो दैट्स व्हाई यू सीन दैट ट्रांसलेट इनटू मैचेस एट वेल. साजिद की जहां तक बात करें तो साजिद इज समवन हु कैन टेक द अटैक टू द बॉलर्स. आपने अगर चैंपियंस कप का फाइनल याद हो तो उसमें भी ही वाज प्रमोटेड अप द ऑर्डर एज अ लो वैल्यू विकेट. So he can play that role. Yeah. These are not things that happen out of nowhere, but it will be, the narrative will be reduced to the fact कि वो यार एकदम पाकिस्तान ने पता नहीं कहाँ से ये आ गए और कहाँ से जीत गए. And that's the problem with Pakistan cricket narratives कि instead of looking at it logically and creating logical narratives, we go down to कि बस ये तो Yeah. पाकिस्तानी है, हमने तो जरूरी है कि पहले हम कोई ऐसा करें कि बाद में मजा आए कि यार हम हारे थे और एकदम जीत गए. तो आई मीन दैट्स जस्ट समथिंग दैट. रेहान भाई का नाम चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम रेहान नजूमी टू रेहान लॉजिकल. आई एम ट्राइंग टू ट्रैक हाउ मेनी टाइम्स यू यूज लॉजिकल इन द लास्ट 3 episodes. Logical, logical, logical. It's interesting that you said that narrative about what it being reduced down to luck. बहुत इंटरेस्टिंग था ऑन द पिचेस. इवन कलम इन अ वेरी टफ सिचुएशन, बहुत उसको जिस तरह जेमी कैरेगर और गैरी नेवल जाके टेनहाग को ग्रिल करते हैं, उस तरह ही इज बीइंग ग्रिल्ड बाय नासिर एंड एथरटन. आई थिंक दे वर बीइंग लिटिल नाइस between the 2-3 people that were interviewing him and Stokes. और उसने भी कहा कि you know we were actually surprised कि पाकिस्तान only realized now कि these are the wickets that they had to make. मतलब हंसी आ रही थी यार. वो बंदा भी आगे कह रहा है कि यार इतनी देर क्यों लगी तुम लोग को. हाँ ठीक है, हम बाद में आएंगे वापस, बट these guys should have been taking that advantage. And then he mentioned that when we go to Sri Lanka, when we go to India, we know exactly यही हमारे पास आएगा. I think you're right. And just on Noman, you mentioned his batting. I think what was trending was कि लारा की rebirth हो गई है, but बल्कि लारा plus आ गया in Pakistan. The way he has been batting, and I think kudos to him for pushing that narrative about Brian Lara being reborn in Pakistan out of Sindh. एब्सोल्युटली. एंड वो जो फनी होने की बात है, तो आफ्टर द प्रीवियस टेस्ट मैच आई मैसेज नुमान के, नुमान ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट स्टोरी कि गर्मियों कहता है मुझे जैकेट ठंड लग रही है. तो ही सेड नहीं इतनी ठंड नहीं लग रही, बस पिंडी पिंडी का डर है, पिंडी में ठंड ना लग जाए. तो थैंक गॉड कि पिंडी के अंदर पिच वो बन गई. और प्लीज ये वाला नैरेटिव भी, एंड आई वाज गिल्टी ऑफ दिस अबाउट 5-6 years ago, where I also thought कि यार पिंडी में नहीं बन सकती स्पिन पिच. But then I followed a few domestic games, spoke to a few players who play in those conditions, spoke to a couple of foreign players जो कहते हैं कि green pitches के ऊपर भी अगर आप you prepare the pitch properly, you can make it into a spin pitch. And I also went through one of the ICC courses of pitch curation, so it's not that it's not possible. It's just that we chose not to. And the problem with that is कि जब पहले ये बात हुई कि पिचेस कैसी थी, तो एक बंदा कहता रहा कि जिस तरह की पिचेस प्रिपेयर होनी चाहिए. एंड एज सून एज पाकिस्तान वन द टेस्ट मैच, जो पिछला टेस्ट मैच जीते, और सारा क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ कि ये पिचेस आपके टाइम पे बनना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बना रहा था, तो कप्तान बनवा रहा था पिचेस. तो आई मीन शिफ्टिंग ऑफ ब्लेम जो है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बट हियर्स द थिंग, इफ यू डोंट विन एट होम, there is no way you're going to be a good test team. It is as simple as that. ये कहीं नहीं होता कि एक कोई ऐसी टीम आए जो कि होम के ऊपर दे ड्रॉ मैचेस और लूज मैचेस एंड देन गो अवे एंड विन ऑल देयर मैचेस. ऐसा नहीं होता. तो आप होम एडवांटेज नहीं लोगे तो यू विल ऑलवेज बी अ मीडियोकर टेस्ट टीम. पाकिस्तान रीच द नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग अंडर मिसबा because of their home record, not because of their away record. And Australia have Yeah. now, after Australia are number 1 at the moment, are also because of their home form. India were number 1 for so long, also based on their home form. Yes, they won a couple of series in Australia, but the thing is it was all on the back of their home form. So home advantage अगर आप नहीं लोगे तो might as well say कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी नहीं है. पाकिस्तान में बड़े प्योरिस्ट बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज नंबर 1 और T20 क्रिकेट बकवास है और ये और वो. तो अगर आप टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 है तो टेस्ट क्रिकेट में आपको अपने होम एडवांटेज लेना पड़ेगा. दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज एट द मोमेंट. इफ यू डोंट डू दैट तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है. अच्छा रेहान, आई एम as happy as I am with everything that's transpired. मेरे जो दिल गार्डन हुआ था थोड़ा बहुत, feels like there's always a media personality that's trying to rain on your parade in some way or another. Like उनसे कभी कभार लगता है कि पाकिस्तानी होते हुए भी
पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं होती। और आई एम श्योर वी ऑल सीन दैट इंटरव्यू विद शान, एंड आई वाज जस्ट, मतलब एक तो, मतलब एक बंदा इतनी मुश्किल से, लाइक आफ्टर सच अ स्ट्रगल यू मैनेज टू ओवरकम सच अ चैलेंज, जहाँ पे मतलब शायद आप, बड़ा मुश्किल होता है निकलने से, एंड उसके बावजूद भी आप, हम इस तरह, लाइक व्हाई आर यू डिराइडिंग द अदर प्लेयर्स अचीवमेंट, व्हाई आर यू, इट्स सो डिस्कंसर्टिंग कि भाई एक बंदा है, उसके इतना बड़ा एक करियर माइलस्टोन है, एवरीबडी इज हैप्पी, एंड आप आके उससे ये कह रहे हैं कि वो 6 मैचेस हारते किस तरह है, एंड स्टफ लाइक कि मतलब अपनी शॉट ठीक, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्यों लोग ऐसे करते हैं यार। मैं हैरान हूं कि आपसे क्यों नहीं बर्दाश्त होता कि लोग अगर जीत गए हैं और आपकी गलतियों को कोई सीमेंट कर, लाइक कोई somebody is trying to cement over your mistakes now, why So can't you just make peace with that instead of deriding the captain who struggled primarily because everything that you left for him? I'm glad you called him a media personality because जैसे आपने एक आधी पहली एपिसोड में भी रेहान भाई को भी मीडिया पर्सनालिटी बन के मेरे को फारिग कर दिया था, but in this case this guy is actually, I think it boils down to this: he is an ex-player and he's a media personality. I think 2 stints in the PCB, complete write-offs. His record speaks for himself. I think very low shots that he took on Shan was not becoming at all of the moment. Um, when I was growing up, when I was really young, so there were only two Pakistani commentators who were extremely fluent in English, and one was Amir Sohail, and he would always be on the comms box, and then there will be Ramiz Raja. और आमिर सोहेल when he used to talk ना, तो ऐसा लगता था कि कोई गुस्से में वो बात कर रहे हैं. He always seemed a little angry, so he used to take me the wrong way कि यार ये बंदा नहीं ठीक है, बड़ा नेगेटिव है अपने लोगों के बारे में. And Ramiz used to joke a lot, and he had a little bit of banter with the other commentators as well. So I kind of took a liking to him. And then growing up, seeing him in the stand, like seeing a lot of his boo boos, a lot of the जो local Gora complex वाली चीजें होती हैं, it just says really odd things about him. And now I think of him in a really different way. I mean, think of it in this way: आप जब छोटे होते हैं, you have this uncle or your आंटी इन फैमिली गैदरिंग्स वो आती हैं, एंड ग्रोइंग अप यू थिंक देयर फाइन, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको पता लगता है यार ये तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, और ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक बातें कर देती हैं जहाँ इनकी जगह नहीं बनती. लाइक एंड इवेंचुअली यू व्हेन यू गो टू दोज फैमिली मीटिंग्स, यू डोंट सिट विद देम, यू डोंट टॉक टू देम, यू, और एक वक्त आता है कि आप उनको फ्लैट आउट जवाब दे देते हैं कि मतलब अपनी औकात पे रहें, अपनी अपनी काम से काम रखें, मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें. आई थिंक ही इज दैट अंकल आंटी, that popo, that nobody wants to talk to him, but somehow he keeps ending up on those family gatherings. Somehow he keeps ending up on the comms box. Somehow keeps having wretched, horrid interviews. Somehow keeps ending up jinxing Pakistan team. And I think थोड़ा सा reset, थोड़ा सा shuffle करना चाहिए. I think we have got some great commentators coming through Pakistan. I think we can do better without him. I think he needs a little bit of a break now. Uh, Maybe it was just he was going aggressive because he didn't want Shan to call out him for his stint as the chairman. I don't know, but I think ये try करते हैं कि इनके बारे में कम से कम बात करें for the rest of the episode. The one downer मैं on सिर्फ एक from चीज yesterday. वलीद, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स पे जब वो आउट हो गए थे, तो ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि पाकिस्तान हैज वन, ही डिडंट रियलाइज कि अभी रहती थी फोर्थ इनिंग. नहीं अरे उसमें एक ही आपकी आपकी तरफ ये प्रॉब्लमैटिक खाला होती थी या पप्पो होती थी? यार why are you like, मैं there can be problematic uncles as well, why are you only like, I don't get it. मैंने तो ठीक कहा है था I started with problematic uncles. हाँ. So Because it could also be, you it could definitely also will be be a problematic uncle. it would it could also be like a senile grandpa नहीं होता, वो आते हैं Hmm. और मतलब वो बातें करते रहते हैं. Like, क्या कर, I think he fits into that age ओह, bracket आई as वाज well. पिस्ड ऑफ बाय द वे. मैंने वो देखा था और मुझे 3-4 दफा नजर आया, मेरा खून उबल रहा था, बट इट इज व्हाट इट इज, क्या कर सकते हैं. I think वी एक मूव एक ऑन. और चीज इसमें ये है कि there's this, ये वलीद touched on the fact really well कि एक तो उसकी analogy मुझे अच्छी लगी. दूसरा ये कि जो ये बात कर रहा है कि बचपन में इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे, तो हाँ. ये चीज से मुझे काफी सिग्निफिकेंट मसला है. मुझे पता है मैं काफी अनवारंटेड अंग्रेजी बोलता हूँ, बट अंग्रेजी इज नो क्वालिफिकेशन
for someone's opinions on something. Also, I deeply respect everyone has their own opinions. That's fine. If you have an issue with Shan, or you have an issue with Babar or whatever, you have every right to your opinion. But जब आप वो opinion देते हैं ना, फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि जब backlash आएगी तो फिर वो बर्दाश्त करो. पर आप क्या करोगे? You Yeah. can give heat, you can't take heat, and that's where the problem arises. कि this is hypocritical. एंड द अदर थिंग ऑन द फैक्ट इज कि यार इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप कहो कि यार मेरे से गलती होगी, मे बी आई वाज रॉन्ग इन द डिसीजंस दैट आई टुक, आई अंडरस्टैंड माय मिस्टेक एंड लेट्स मूव ऑन. बट हमारा मसला ये है कि गलती मान ली तो फिर तो वो उससे बड़ी गलती नहीं हो सकती, गलती मान लो, you know. And instead of admitting you're wrong, you try to put everyone else down around you कि भाई तू भी गलत है, तू भी गलत है, Yeah. तू भी गलत है. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक्स प्लेयर की बात करोगे कि जी वो फलाने टाइम के ऊपर उसने एक्स वाई जी किया, तो कहेंगे तूने क्या किया, या यानी इट बिकम्स इनटू व्हाट अबाउटरी इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स. अब Yeah. मुझे एक बात बताएं, जब ये सारी शान से डिस्कशन हो रही थी कि तुम 6 मैच लाइन में हार गए थे, what if Shan had turned around and talked about his playeri? प्लेयरी पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए ना, आप उस चीज के ऊपर बात करो. अगर Yeah. शान कहता कि 57 टेस्ट मैचेस में आपने सिर्फ 2 सेंचुरियां क्यों की हैं, तो वुड यू हैव टेकन इट? आई डोंट थिंक सो. No, So it's, ये it's I mean this is no, someone being a good cricketer, a great cricketer doesn't translate into them being a great coach or them being a yeah. great commentator, right? Similarly, someone being an average at a given sport doesn't translate into the fact कि वो sport पे बात नहीं कर सकता. अब नासिर हुसैन is Nasir Hussain, not Nasir Hussain. Nasir Hussain is, in my opinion, one of the best commentators in the world. ठीक है? Nasir could not be classified as a great player, right? Nasir will never talk to a player in a demeaning tone when he's interviewing them. वो कभी भी demeaning tone में बात नहीं करेगा. वो उनकी प्लेयरी पे बात करेगा और वो उनके ऊपर बात करेगा कि he will leave the question to you rather than answer it himself. I think that's basic professional Yeah. courtesy कि जब आप same profession में काम कर रहे होते हो तो आप एक दूसरे को प्रोफेशनल कर्टसी देते हो. और अगर आप नहीं दे सकते प्रोफेशनल कर्टसी, तो फिर प्लीज हैव द स्टमक टू आल्सो देन फेस क्रिटिसिज्म. दैट्स ऑल आई विल से, Yeah. बिकॉज या काफी कुछ कह पर्सनल दिया. अटैक्स पर्सनल अटैक्स जायज नहीं है. इट्स एज सिंपल एज या दैट. आप या अगर मुझे बात करो कि रेहान का एनालिसिस बहुत बकवास है, आई विल टेक इट. इफ यू बिकम ट्रू. पर्सनल विद मी, देन आई विल आल्सो बिकम पर्सनल विद यू, एंड देन टेक इट. यू आल्सो हैव टू टेक इट. तो इसका मतलब है आपसे कोई पर्सन हो गया. अच्छा. नॉर्मली नॉर्मली तुम ही होते हो भाई, प्लीज. ठीक है. अच्छा. सो एक ये जो वो थी ना, इंग्लिश एज अ प्री क्वालिफायर फॉर हैविंग एन ओपिनियन. आई थिंक हमारी कैप्टनसी पे भी हमेशा पाकिस्तान की ना यही 7 क्वालिफायर अटैच होता है कि अगर हाँ ये बंदा बाकी सब चीज़ें ठीक है, क्रिकेटिंग ब्रेन है नहीं है, बट यार अंग्रेजी ठीक बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमें आके रिप्रेजेंट कर रहा है ना तो मज़ा आ जाएगा. एंड आई थिंक watching a lot of football corrected this mistake in my head at least, getting into even business corrected a lot of this for me. So, like वहाँ पे there's a sense of pride कि अगर नहीं आती तो नहीं आती, मैं तो make do with what I have. Like Yeah. what I'm doing on the pitch matters more. But यहाँ पे it's unfortunately still a pre-qualifier. अब मैं आपको example देता हूँ once again of our darling Sajid. When he goes out and gives a presser, तो वो अंग्रेजी में हो या ना हो, द पर्सनैलिटी शाइन्स थ्रू. नजर आता है कि यार एक बंदा Yes. आ गया, बात करने का मजा आता है. फिर लोग वेट कर रहे होते हैं, इवन इफ यू डोंट नो द ट्रांसलेशन, आपको पता होता है कि यार अब ये बात करके क्या मजा आएगा. सो एंड आई थिंक वी आर मूविंग इनटू दैट वर्ल्ड वेयर, and social media as well, I think, is doing a great job in helping players build that confidence within themselves. Yeah. आई थिंक एक चीज तो ये है कि आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर कोई बंदा सीख रहा है ना, तो उसमें कोई हार्म नहीं है. आपको सीखनी चाहिए, बिकॉज दैट्स फाइन. और उसके बाद सीखने के बाद अगर वो टूटी फूटी बोल रहा है तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई. उसकी अगर आप किसी गोरे को कहो कि Yeah. उर्दू में बोले या हिंदी में बोले, तो मैं देखता हूँ वो कितनी वो स्मूथ बोलता है या कितनी फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है, वो उर्दू या हिंदी बोलता है. सो आई मीन दिस, ये प्री रिक्विजिट एक तो नहीं Yeah. होना चाहिए. और दूसरी चीज ये कि ये मैं ये तुमने फुटबॉल वाली बात की, ये लैक ऑफ एक्सपोजर का मसला है. लैक ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कि व्हेन यू ओनली वॉच वन स्पोर्ट, व्हेन यू ओनली लिसन टू वन थिंग, तो आपका माइंड जो है वो डब्बे में बंद हो जाता है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया. सो आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि स्टार का जो ब्रॉडकास्ट है, यू रिमेंबर स्टार एंड ईएसपीएन यूज्ड टू, जब ईएसपीएन स्टार होता था इससे पहले, तो उनकी इंग्लिश कमेंट्री होती थी.
Slowly they shifted to English and Hindi, and then they went into Tamil and all the other languages. तो basically आप अगर results check करें तो उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस आर गेटिंग मोर ट्रैफिक आउट ऑफ दोज पर्टिकुलर एरियाज, राइट? हमारा अभी भी अगर चैंपियंस कप होता है या डोमेस्टिक कप होता है तो हम उसमें अभी भी 20 ओवर्स के 20 ओवर्स या 50 ओवर्स के 50 ओवर्स इंग्लिश कमेंट्री कर रहे होते हैं. दैट डजंट मेक सेंस बिकॉज आप लोकल ऑडियंस के लिए बना रहे हो और आपकी कितने परसेंट ऑफ योर ऑडियंस जो है उसको अंग्रेजी की पूरी समझ आती है. तो आप उनके लिए उर्दू करें. और हम भी गिल्टी हैं, हम भी हर टाइम ब्ला 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 अंग्रेजी बोलते रहते हैं, खासकर वलीद. तो उसमें भी हमें भी आपको अपनी ऑडियंस देखनी है कि आप किनसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कोई हार्म नहीं है आपको अंग्रेजी आए या अंग्रेजी ना आए. दैट इज नॉट अ प्री कर्सर टू यू टॉकिंग अबाउट द गेम और अंडरस्टैंडिंग इट. मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी. तो ये बहुत ही एक फजूल घटिया सोच है. अच्छा, जस्ट चेकिंग ऑन वन थिंग, हम थोड़ा सा अगर on the third test आ जाएं, and this is the final one on me on these two guys. I just can't get enough of them. ये बताएं कि when we think about great spinners, तो बेन स्टोक्स was getting a lot of heat के जो उनके spinners ने आके किया, आपका लीच इतना पुराना है, बाकी लोग इतने पुराने हैं, nobody could perform at that level. And narrative is कि these guys are the creme de la creme, they are top of the top, ऊपर से ऊपर के player हैं. Is it really the case? Where would they be ranking? Even in Pakistan's local circuit, it seems like they don't really get that many chances. Brar is probably ahead of them. Where would you rate these two guys just on raw skill? And what is the ceiling that they can hit? Or are they already at their ceiling? नंबर वन तो ये पाकिस्तान डजंट प्ले एनफ टेस्ट क्रिकेट. तो अभी पाकिस्तान का टेस्ट सीजन खत्म हुआ है तो इसके बाद टेस्ट कोई साल बाद है. और होम टेस्ट जो है वो तो पता नहीं कब है. तो बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान के एफटीपी के अंदर होम टेस्ट हैं ही नहीं, तो ऑल दीज स्पिनर्स, ये फिंगर स्पिनर्स जो हैं जिनको आप होम एडवांटेज में यूज कर सकते हो, दे गो अंडर द रेडार, गो अननोटिस्ड. अब ये सीरीज आई है, अब पीपल विल से के और साजिद को ना वनडे खिला दो या T20 खिला दो. और वो बेचारे को जब वो उसका फॉर्मेट के खिलाफ खेलेगा तो उधर अगर उसको मार पड़ी तो कहेंगे जी टेस्ट से ड्रॉप कर दो, विदाउट रिमेम्बरिंग कि उसने एक साल टेस्ट खेला नहीं. तो एवरी प्लेयर इज वो जो हम बात करते हैं स्किल सेट डिफरेंट होता है. नेथन लायन को वो T20 नहीं खिला रहे, एडम जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच नहीं खिला रहा. तो ये बहुत सिंपल चीज है कि आपके जो डिफरेंट फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर है. और बिकॉज पाकिस्तान डजंट प्ले एनफ टेस्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ दी स्पिनर्स उनके आधे से ज्यादा करियर्स गुजर जाते हैं डोमेस्टिक खेल खेल के. और जब वो खेलते हैं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपका होम सीजन आता है तो तब आपको नोटिस होते हैं. और उसके दरमियान अगर वो बेचारा कोई अवे टेस्ट मैच खेल लिया तो उसके करियर पे धब्बा लग जाता है कि ये तो बिल्कुल ही फारिग बॉलर है, इसने बड़ा डिसअपॉइंट किया है. तो कंडीशंस, अगेन वी कम बैक टू द पॉइंट, कंडीशन से इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं. और दे आर रियली गुड स्पिनर्स बोथ ऑफ देम. द की टू बोथ ऑफ देम इज कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट. लाइक द वे नुमान, अगर नुमान उतनी स्पिन नहीं करता बॉल तो नुमान की एक चीज बहुत क्रूशल है कि नुमान जिस तरह पेस वेरी करता है कि ही कैन फ्लाई, टॉस द बॉल अप, then pull it back a little. It's almost like he has it on a string. And that comes with playing a lot of domestic cricket, playing a lot of, on very tough pitches के जहाँ पे उसको रन रोकने भी हैं, ट्राई भी करने हैं. अब जिस तरह मैन डकेट की हम बात कर रहे थे, तो Noman is not trying to get him out by spin. Noman is trying to get him out by beating him in the flight. तो वो कभी ज्यादा स्लो कर देगा, कभी ज्यादा तेज कर देगा. And a lot of England's players are very comfortable sweeping at a certain pace. जब आप उस पेस से नीचे ड्रैग करोगे बॉल या ऊपर ले जाओगे, एकदम तेज करवा दोगे, तो then that's where they don't play the sweep as well. So I mean that's key. और इन दोनों का ये है कि the way they vary their pace is what stands out for them. जहां तक इंग्लैंड की आप बात करें, इंग्लैंड के लीच की बात करें, किसी भी बॉलर की, तो इंग्लैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है. ये इवन व्हेन दे डू टेक विकेट्स, इट्स नॉट लाइक अगर उनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स होते तो दे वुडंट बी थ्रोइंग रिलेटिवली अननोन यंग स्पिनर्स इनटू द फ्रे. रेहान की आप बात कर लें, तो बेसिकली दो ऑल दोस गाइस वर कमिंग थ्रू उनके ऊपर है. तो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग एट समवन लाइक मे बी जफर गौहर इन द फ्यूचर, के जो उनके अगर क्वालिफाई कर जाता है तो उसको दे विल लुक एट हिम. और एक आखिरी चीज, बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड कंसिडर होते हैं शेन वॉर्न. इफ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द टू बेस्ट, मुरली एंड शेन वॉर्न. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जहां पर बॉल टर्न ज्यादा करी हो हर स्पिनर सक्सेसफुल हो. तो व्हेन शेन वॉर्न यूज्ड टू टूर इंडिया, तो ही हैड अ वेरी पुअर रिकॉर्ड इन इंडिया. In India, he was taken apart by the likes of Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, Dravid, to the point कि एक सीरीज में मुझे याद है उनको इतनी मार पड़ी थी इंडिया में कि he resorted to bowling a bouncer while bowling spin, कि सीमा पकड़ के he bowled a bouncer in one of the games. So again, because he was a leg spinner and तो उतना effective leg spinners नहीं होते, especially who turn the ball big on very spinning pitches.
They are good on Yeah. medium spin pitches, because ऑन बिग टर्निंग पिचेस आपका फिंगर स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव इसलिए कि उसकी अगर बॉल स्पिन नहीं होगी तो एलबीडब्ल्यू होने का चांस है, आम बॉल हो जाएगी। अगर उसकी बॉल टर्न Yeah. होगी तो आउटसाइड एज लगने का चांस है, वेयर एज विद निक हो जाएगा। स्पिनर आपको पता है कि स्पिन होनी ही होनी है। सो दैट्स व्हाई फिंगर या। स्पिनर्स आर मोर इफेक्टिव ऑन pitches that turn a little bit more. But yeah, Sajid and Noman are quality and have been quality for years. And speaking of quality, in the batting as well, we saw heroics, tons, double tons, triple tons from England in the first test, and then the narrative in the second test was around Kamran Ghulam. But this time around, South came in and played a stunner of an innings. उसके अलावा Aga had been the talk of the town for what he was doing जब वो टेल के साथ खेला था बार बार. I think what South has done, जो South के ऊपर narrative है, I think centerpiece है to the last test. He was the man of the match as well. For him to play that innings जहाँ पे boundaries were not really coming in, but effort was outstanding, and then playing with the tail. Kudos to him as well for sticking out. And उसकी भी जर्नी में बहुत ज़्यादा ups and downs हुए हैं, and he had a lot of heat going into the third test. Yeah, 100%. I think South की जो journey है, it's remarkable, and I'd go as far as to say कि South may have issues against pacers, right arm pacer bowling around the wicket to him, and he's a good enough player and a smart enough person to figure those out eventually. But against या। spin, I'll go as far as to say कि he's one of the three best players of spin in the world right now in Test cricket. Talking about Test cricket, इससे पहले कोई T20 में छक्के नहीं मार सकता। तो we're talking about Test cricket कि he is one of the best। और जो हम स्वीप की बात करते हैं, साउथ की जो स्वीप की रेंज है ना, वो उसकी डेवलपमेंट अगर आप देखें तो अगेन दिस इज नॉट आउट ऑफ नोवेयर। साउथ स्वीप पहले भी मारता था, देन देयर केम अ टाइम इन हिज पीरियड व्हेन ही स्टॉप्ड प्लेइंग द स्वीप एज मच। दिस इज डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह की बात कर रहा हूँ। देन ही वर्कड ऑन इट अगेन। वन ऑफ द पीपल दैट ही वर्कड विद, एंड उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी क्रेडिट किया था वर्ल्ड कप में, 2023 के वर्ल्ड कप में व्हेन ही बिकेम प्लेयर ऑफ द मैच, तो उसने कहा था हनीफ मलिक प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय करियर एंड ही थैंक्ड हनीफ मलिक। सो हनीफ मलिक वर्कड ऑन रेपिटेशन ऑफ दैट स्वीप शॉट। So that sweep shot now he can play it from mid wicket to short fine, कि पैडल से लेके या। स्लॉग से लेके हर जगह वो खेल सकता है। तो उसकी रेंज जब इतनी ज्यादा हो जाती है, जब आपके पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं अगेंस्ट स्पिन, तो देन अ स्पिनर विल स्ट्रगल टू बोल एट यू, अगर वो आपको एक ही जगह फंसा नहीं सकता। एंड देन साउथ के डिफेंसिव टेक्निक इन स्पिन इज सेकेंडरी टू नन। और उसकी भी एक वजह ये है कि साउथ टॉक्स अबाउट दिस एज वेल। तो साउथ जब व्हेन ही वाज यंगर, तो साउथ प्लेड एट इन वेरी टाइट स्पेसेस। वो गली के अंदर एक क्रिकेट, यानी दीज आर थिंग्स दैट शेप यू एज अ प्लेयर, कि गली के अंदर जब वो क्रिकेट खेलता था तो वन टिप वन हैंड खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो वो जो चुटकी स्पिन और इस तरह की बॉलिंग होती थी, तो उस पे यू कुड नेवर गेट हिज पैड। कि उसके आप अगर दोस्तों से पूछो, एक दो दोस्त जो उसके साथ खेलते हैं, वो कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता था कि साउथ के पैड को बॉल लग जाए, कि आप जितनी मर्जी स्पिन कर लो, दीवार को लग के बॉल वापस आ जाए, तो इवन देन ही विल गेट अ बैट ऑन इट। That's why he's such a good player of spin in close spaces, कि even जब fielders are up close to him, he can play the defensive shot and then also has the release shots and sweeps and all, and he just needs to find that release shot against pacers. Once he does that, so he'll be a top test player। Or Saud ka, I think Saud and Aga, what they've done for Pakistan in this test cycle, उनके बगैर Pakistan would have struggled। Both of them, including Rizwan या। as well, वो 5, 6, 7 जो पाकिस्तान का है, statistically is the best in the world over the last test cycle, and they've bailed Pakistan out of so many situations. And part of it has to do with their intelligence. Part of it has to do with analyzing the situation around them. And Aga का जो art है, जो वलीद आप बात कर रहे थे, batting with the tail is one of the toughest things in cricket. And Aga does it better than most people in the world right now। और क्रेडिट हो, मैं जिस तरह वो सार टेल को लेके भी चलता है, इट्स नॉट लाइक कि वो सारी बॉलें खुद खेल लेगा, कि 4 बॉलें खेलेगा, 5वीं पे सिंगल या। ले लेगा। He takes the tail with him and he talks to them and he gives them confidence कि तुम ये कर सकते हो, let's do this, let's try this। So I mean, huge credit to both Saud and Aga, and both of them have really good leadership abilities। by leadership मैं ये नहीं कह रहा कप्तान बना दो। leadership से मतलब ये है कि एक टीम में एक लीडर नहीं होता, एक टीम में different leaders होते हैं for different things। Like Aga is a great leader for, he's great talking to people while batting with them, so he's a great partner to have at the other end। South, similarly, when South and Aga bat together, so it looks very different because both of them are joking with each other and they keep it comfortable। They don't look at the scorecard enough। वो एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। That's one way of taking pressure off you। So I mean,
their intelligence is key, and that's why they've come so far. I mean, उनके talent के ऊपर अक्सर लोगों ने कहा कि talent नहीं है इनका, ये नहीं है, short ball नहीं खेल सकते, blah 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 blah. But there is no player in the world who's complete. Every player has some area where they struggle. It's how you get out of it. I would just like to highlight unless you're कि Numan Ali. रेहान ये नहीं कह रहा रेहान Unless ये you're नहीं Numan कह रहा Ali. कि वो Yeah. कैप्टन बनने वाले हैं या उनको होना चाहिए. I'm just highlighting this. This is just leadership qualities. Once again, do not misinterpret anything that we're saying at this point because ये MVP बात इधर आज से उतर के कैप्टन कोई अनाउंस किसी भी होना है. हो गया भाई, Rizwan is if this is clipped incorrectly, Oh, we sorry. don't I want thought we were this still coming back pretending to that we us. don't know who the captain is. Okay. Let's stop pretending Rizwan will be the captain, and Aga will be probably the captain for the T20 series in Zimbabwe. That's how things Yeah. stand at the moment. और स्क्वाड्स भी आई थिंक अनाउंस, जब तक ये शो आएगा अनाउंस हो चुकी होंगी. वन थिंग आईड से इसके जो T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे जा रही है उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रूम, लाइक चेंजेस हुए हैं. इट्स वेरी गुड. आई एम वेरी प्रो द फैक्ट कि आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाओ व्हेन यू प्ले टीम्स लाइक जिम्बाब्वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. बट आई Yeah. थिंक द स्क्वाड कुड स्टिल हैव बीन बेटर. लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. आगा उसमें ऑब्वियसली उस टूर के ऊपर प्लीज डोंट जज. जिम्बाब्वे आल्सो बीट, इफ यू रिमेंबर, इंडिया in one of the T20s. So it's not like, don't think कि pre-qualified है कि Pakistan will win that series. But yeah, it's a good experience for young players, and I think ऐसे experiences आपको अपनी bench strength को 100% देने चाहिए. आई थिंक इस टेस्ट मैच ने ना मुझे कुछ 3 महीने का सब्र दे दिया है और इस वक्त अभी मैं 3 महीने आई वोंट कंप्लेन अबाउट मच. मैं शक्लें बनाऊंगा लेकिन मैं गालियां नहीं दूंगा. टेंशन ना लो, आई थिंक मैनचेस्टर जितनी यूनाइटेड का जल्दी मैच आ रहा है तो तुम कंप्लेन अभी दोबारा शुरू कर दोगे, यार ठीक है? ये देखो ये पर्सनल नहीं होते. खुद ही बोला था पर्सनल नहीं होना चाहिए. तो ये बट आई थिंक थोड़ा सा हमें इंग्लैंड के बारे में भी बात करनी चाहिए गिवन के बेसबॉल 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 बहुत ज्यादा सुन चुके हैं हम. लेकिन अभी तक लाइक सो अ लॉट ऑफ इंग्लिश मीडिया हैज बीन लूजिंग देयर माइंड्स. वो एक तो पोप का कह रहे हैं कि ये क्यों है भाई, क्रॉली की एवरेज उन्होंने 32 बना दी है कि जी क्रॉली तो कुछ कर ही नहीं सकता. है ना. वो ये भी कह रहे हैं कि स्टोक्स को जो है बाहर निकालें. ये किस तरह का कप्तान है, इसने किया क्या है, मतलब ये क्या तरीका है, और बेसबॉल का एक्सपेरिमेंट हम खत्म करें क्योंकि ये तो नहीं चल रहा. एंड अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज के इंग्लैंड आर नॉट कमिंग टू एशिया बिफोर 2027 नाउ, विच इज बांग्लादेश के साथ उनकी सीरीज. सो अगर अब उनका अगला वो जो 3 साल का स्पेल जो है वो अच्छा निकल जाता है, 2 साल का जो स्पेल रहता है वो अच्छा निकल जाता है, तो उसमें फिर सारे फिर से भूल जाएंगे एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू गो बैक टू बीइंग लाइक के बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, ये तो कमाल है, हमने इनोवेट कर लिया टेस्ट क्रिकेट को. तो किस तरह लेके चलना है इस चीज को? क्या इनके फेलियर जो है ये काफी नोटिसेबल है इस चीज के आई अंदर, थिंक इस दफा एटलीस्ट? पहली चीज तो ये कि आई एम ग्लैड कि बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में आई, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ न्यू डायमेंशन टू टेस्ट क्रिकेट. विनिंग और लूजिंग इज सेपरेट, ठीक है? And it has, आप माने ना माने, run rates of all teams have gone up. um, even Pakistan का, New Zealand जिस तरह भी इंडिया में they played a bit of attacking cricket. India themselves uh, played like that against England. They beat England, gave England a taste of their own medicine. um, या one of the things is कि even श्रीलंका जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला अभी, तो श्रीलंका played at a very decent rate. So it is a, in my opinion, it's a great addition to Test cricket. Number one. Number two, के ये जो English गोरा uncles of 80 years old trying to protect the sanctity of cricket, and ये रूल क्यों चेंज हुआ और ये क्यों हुआ, वो ऐसे बेसबॉल को बातें कर रहे हैं जैसे बेसबॉल से पहले तो वो हर सीरीज जीतते हो. बेसबॉल से पिछले 2 साल इंग्लैंड क्रिकेट के उठाकर देख लो, उनको कोई टीम ऐसी नहीं जिन्होंने जलील ना किया हो, ठीक है? वो जिधर गए हैं आ रहे हैं, उनके होम पे जो आया उनको वो जलील करके गए हैं. तो बेसबॉल के आने के बाद उनके थोड़े रिजल्ट्स बेहतर हुए, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके मुल्क में ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है. Although, I love the fact how, McCullum talks about it, or how Stokes talks about it, or how उनकी पूरी मैनेजमेंट इस बारे में बात करती है कि it's fine, we lost, it's fine, let's move on. And that's why eventually these teams succeed, because उनको वो backing from the board, from the coaches, from the management, from the captain मिलती है कि हारना is part of the journey to reach that level. तो process हम follow कर रहे हैं. As या long as the process is following, the results will eventually come. तो बेसबॉल का क्रिटिसिज्म, आई नो, a lot of it is
a lot of it is contrarian nature के अगर मैं भी कह सकता हूँ कि बेसबॉल मुझे नहीं मजा आया, मैं तो पहले ही कहा था कि पिचेस इनके खिलाफ मुश्किल बनाओ तो ये तो जलील हो जाएंगे, but still it's a great innovation in cricket, and it's not like England were winning every test match before baseball. So number Correct. one, the future for baseball, I think, depends on again where they're playing. Teams will now realize कि इनके against थोड़ी seaming या थोड़ी high spin pitches बनाए, so they will struggle. They're bound to struggle. So the teams will do that. On the other hand, England need to work on one thing that's very important, which I mentioned at the start of this series as well. कि more than the batting of baseball, उनको अपनी bowling पे काम करना है. The bowling isn't as strong as it used to be. स्पेशली ऑब्वियसली क्योंकि आपके दो बॉलर जो कि एक ने दोनों ने मिला के कुछ 2,000 आउट किए हों टेस्ट क्रिकेट के अंदर. मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, इससे पहले कोई नीचे स्टार्ट पोस्ट करे, बट वो दोनों जब निकल जाए तो इट लीव्स अ गैप, सो इट विल टेक टाइम फॉर देम टू फिल दैट गैप ऑफ दोज टू टेस्ट बॉलर्स, ब्रॉड एंड एंडरसन. इट विल टेक टाइम बिकॉज इस क्वालिटी के बॉलर को रिप्लेस करने में टीम्स को 3-3 4-4 साल लग जाते हैं. So England will need to take that time before they get that. And the other thing is, if they want to be successful in places like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, so then obviously they'd eventually have to have a good left arm spinner. With all due respect to Leach, he's a very decent bowler, but आपको थोड़ा क्वालिटी से ज़्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर की चाहिए. Funnily enough, गालियां सिर्फ बशीर को ही पड़ रही हैं और किसी का नाम नहीं आया, बशीर का नाम आया सिर्फ. So wonder where that's coming from. Oh yeah, yeah, But yeah, yeah. वो है ना, वो मतलब इंग्लैंड अच्छा 2019. आई रिमेंबर व्हेन इंग्लैंड वन द 2019 वर्ल्ड कप ना, तो मेरा फ्रांस के ऊपर भी यही ओपिनियन था इन फुटबॉल और इंग्लैंड के ऊपर भी कि द डे दीज टीम्स प्ले टीम्स फुल ऑफ नॉन लोकल्स, दे विल विन वर्ल्ड कप्स. एंड फ्रांस वन द 2018 या वर्ल्ड कप एंड इंग्लैंड वन द 2019 वर्ल्ड कप. 100%. सो एम्ब्रेस डाइवर्सिटी इज व्हाट आई विल से. कल्चर कल्चर एम्ब्रेस कल्चर फॉर अ एंड चेंज. डाइवर्सिटी, या. हर दफा देसी की गलती नहीं होती तुम लोग के मैच हारने के ऊपर यार. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. यार वैसे आप उनको क्या कह रहे हो, हमारे अपने भी तब तक वैलिडेट नहीं होते जब तक कोई फॉरेन पासपोर्ट का बंदा ना कोई बात करते. जिस तरह मैं इतनी देर से सेम बात कर था, फिर नसीर हुसैन एज यू सेड उसने बात की तो आपने. यार उसको Yeah, भाई, is speaking of the diversity mix, अब I think जब भी हम इंग्लैंड को देखते हैं, न्यूजीलैंड को देखते हैं, साउथ अफ्रीका को देखते हैं, even just the one representative in Australia so far, but good to see people from South Asian diaspora making such a big mark in sports around the world. और ये या कोई मतलब वो वाली बात नहीं है. अगर आप जैसा अगेन हम फुटबॉल फ्रांस की बात करते हैं, immigrants from all over the world come and become a benchmark cornerstone of teams. And speaking of New Zealand, उनके पास भी दो तीन साउथ एशियन बैकग्राउंड के लोग खेल ही रहे होते हैं, and they were in India not so long ago. So if you guys allow, we switch our focus to across the border and talk about India versus New Zealand. So 100. just to set the context, हमने लास्ट टाइम बात की थी वेयर इन इंडिया गॉट शॉट आउट फॉर 46 एंड वी थॉट कि एपिसोड बहुत लंबी हो गई है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट. बट ऑफ कोर्स अगर क्रिकेट हो रही हो या क्रिकेट में कुछ भी हो रहा है, तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू नॉट कीप इन टच विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंडिया. एंड दे वर ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रीक, जिस अंडरटेकर की स्ट्रीक थी, उसमें स्ट्रीक चल रही थी उनकी ऑफ बीइंग अनबीटन एट होम. एंड India has transformed into what Australia used to be, that it was just impossible to even think कि आप जाके वहाँ पे जीत सकते हैं. एंड ये जो स्ट्रीक है, अराउंड 12 साल की स्ट्रीक है अब जो न्यूजीलैंड ने तोड़ी है बाय बिकमिंग अ टीम दैट वन in a test series in India after so long. And to be honest, New Zealand से कुछ ज़्यादा expectations नहीं थी going into the series. Yes, they were going in with a win against Sri Lanka, but लॉस्ट not श्रीलंका. really. Sorry, श्रीलंका को हराया, बट कुछ ज्यादा श्रीलंका से एक्सपेक्टेशंस हारे. या श्रीलंका से भी हारे. सॉरी या सॉरी फॉर द फंबल गाइस. या श्रीलंका से भी हारे, कोई वार्म अप भी नहीं खेला, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ लैकलस्टर डिस्प्ले. बट something happened, things turned around for them and they were able to record that 2-0 win. um, जो streak है ना, I think it's good कि streak टूटी, because I think India's team is also going through a phase of evolution, so it would be really good for people coming in to not have that streak on their back.
Also, I think streak को भी थोड़ा हवा बना लेते हैं. I think we can enjoy the cricket more and stop thinking about the streak now. But for Gautam Gambhir, who just came in into the national team setup for the coaching role, I think him like was जो उसकी जर्नी है ना वो स्ट्रीक इनकैप्सुलेट करती है कि कितनी लंबी थी. So the last time you know India lost a series, he was part of the team. उसके बाद he made a comeback into the test series. He won an IPL. He joined the parliament. उसने वहाँ पे service दी. Then he mentored two different IPL teams, and then KKR में वापस आके he won the IPL as a mentor. And then finally he came back in as India's head coach. So it has been that long. Um, Rehan bhai, why don't you run us through the overall narrative beyond what I have said, and especially focusing on the Indian team itself? Believe this feels like the trajectory Rehan wants to take in life. No, no, no. Other than Parliament, yes. And other than, coming back and losing a test series. अच्छा, I think जहाँ तक इंडिया की बात है, the run they've been on is unbelievable. In fact, series तो छोड़ो, उनको टेस्ट मैच भी होम पे हराना over the last 12 years has been very, very difficult. England won a test match start of the series, and then they were completely blown away in the next four test matches. I think Australia had an one-off victory, and then they were completely blown away. Um, and so basically, New Zealand के लिए ये करना, and also don't forget कि their best batter wasn't playing in this series, and then also the fact that Yeah, their Kane was captain had out. just stepped down. So it's a huge, huge achievement. And one of the things that New Zealand did really well was the fact कि न्यूजीलैंड, अगर आपने कॉनवे की इनिंग्स देखी हो तो कॉनवे ने जितनी स्वीप और रिवर्स स्वीप मारी, तो दैट मेंट दैट इंडिया हैड टू कीप चेंजिंग फील्ड्स इंस्टेड ऑफ वो सारे प्लेयर्स जब आप ऊपर ले आते हो तो इंडिया हैड टू ऑप्ट फॉर मोर डिफेंसिव फील्ड्स. And Conway and a lot Yeah, of other New Zealand batters made them do it. It was a complete planned tactical decision for New Zealand to take the attack. अक्सर ये होता है, and we've seen that. I've personally experienced this जब श्रीलंका पाकिस्तान की टीम गई थी कि once you attack certain test bowlers तो उनको नहीं पता चलता कि how to react to it because they're used to batters trying to play them out. They're used to batters playing a certain way in test cricket, and once you attack them, then their response isn't as calm as it normally is. So New Zealand I think banked on this. बट एक चीज इसमें फॉर श्योर है कि अश्विन और जडेजा जो हैं उनका रिकॉर्ड ओवर द लास्ट डेकेड इन yeah, इंडिया is unparalleled. It's unbelievable how well they've done, not just with the bat, with the ball, but unki batting contributions have been amazing. And Rohit Sharma, I think, mentioned in his post match as well, ke, they're allowed to have one bad series. It's not a big deal. एक बुरी series सबकी हो जाती है. But yeah, there'll be a lot of question marks on Gambhir's coaching because obviously अगर 12 साल का रन है तो आपके ऊपर प्रेशर आता ही है जब आपकी टीम 12 साल बाद सीरीज हारी हो, और वो भी नॉट अगेंस्ट अ टीम जिससे आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि आप हारें, and not on pitches that were supposed to suit you. One of the biggest criticisms that's coming I, out of India right now is Ashwin. Ashwin was very expensive. And I think yeah, उसके play test match में were the most expensive figures in his career when he's bowled 10 plus overs in test cricket. And that's all credit आप New Zealand को भी दें क्योंकि they spotted this and they attacked. Now, knowing their careers and following their careers, Ashwin and Jadeja, you know the fact that in the next series they're going to find ways to tackle this. And when someone comes out and plays a similar way against them, so they will know how to go against it. One of the things that New Zealand did really well, again, sweep, reverse की हम बात करें, England also tried to do the same thing. They tried to do it in Pakistan. But New Zealand has always been one non-Asian team जिनकी method जो है आप उसको कह सकते हैं is most logical methods and all वो उनकी, yeah. और a huge credit goes to their batting coach Luke Ronchi behind the scenes कि जिसने ये strategy उनको दी, implement करवाई, और जिस तरह वो खेले और उसको exercise किया. I think a lot of it had to do with the fact कि Ronchi also is one of the people who believes in telling his batters कि don't think about failure. If you get out, you get out, don't worry. You play your shots, get out, it's fine. If you play half-hearted, then you get out, then it's a problem. So I mean, that is a style of coaching that's successful these days, and huge credit to New Zealand for. I think this is one of their, in their cricket's history, up there with their greatest achievements. Uh, I mean, it's just you couldn't think of it before the series, especially पहले टेस्ट मैच के बाद मैंने भी आपको बोला था
कि इंडिया एक टेस्ट मैच हार जाता है, उसके बाद कंप्लीटली एनाइलेट टीम टू विन द सेकंड टेस्ट मैच इज अनबिलीवेबल. Yeah, 100%. And I think one of the there are two. I have a two-part question. एक तो जो विराट की 2 साल या 3 साल पहले was a rant about कि टेस्ट वेन्यूज हमारे 5 जो हैं वो टेस्ट सेंटर्स बन जाने चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने कहाँ पे खेलना जाना है, क्राउड हमें पता है किस तरह का है, हम फेमिलियर हो उसकी पिच के साथ, एंड वी वांट टू प्ले दैट. ये दोबारा सर्कुलेट करना शुरू हो गया था दिस टूर्नामेंट बिकॉज इंडिया अपेरेंटली हैव वेन्यू इश्यूज बिकॉज वो कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे 5 टेस्ट के ग्राउंड है, हमने इन्हीं में खेलना है जो मर्जी हो जाए. तो I sort of agree with him because I understand where he's coming from in that sense, but I also feel like कि itna like this can't be just the only excuse for like struggling, but at the same time you highlighted Ashwin and Jadeja कि वो थोड़ा सा struggle कर रहे थे, but I want to make sure कि we point out Washington Sundar was fantastic, 7 wickets. He really carried the slack for the other bowlers not performing, and as an all-rounder I was very impressed with how he was bowling in this tournament. 100%. आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर का भी काफी देर बाद कम बैक हुआ है इन टेस्ट क्रिकेट. एंड दैट्स अगेन वन एग्जांपल ऑफ प्लेयर्स डूइंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट. और जब आपका होम सीजन आता है तो देम यू गिविंग देम अ चांस एंड देम शाइनिंग. सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट. One bowler that I really want to talk about is Mitchell Santner. He Yeah, outshine local bowlers, which takes a lot of doing. And Mitchell Santner, 100%. फॉर मी, जिस तरह वो बॉल का पेस वेरी करते हैं, देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड लाइक हिम. ही इज वेरी यूनिक इन व्हाट ही डज. उसका जो एक्शन में जो स्टॉप आता है, सो यू कांट लाइन हिम अप. ही कैन टॉस द बॉल अप एज वेल. Getting the pace right in India is the key to picking up wickets. So Indian bowlers Yeah, are used to it. They are very good at it. Jadeja fires the ball in and knows when to slow it down. Ashwin's very good at it. But for a foreign spinner to come in and do what he did is unbelievable. I mean, this could be the last time I saw a foreign spinner in my memory. दरमियान में एक आधे हो सकते हैं. I'm sorry if I'm missing out anyone. But the last time I saw someone do this to India, an India spinner, was Saklan Mushtaq back in the late 90s in Test cricket, where he took so many yeah, wickets and basically strangled India. So, I mean, it's just an amazing achievement. Now India का World Test Championship के final में qualify करना is it's going to be a huge challenge, because if they had won this series comfortably, then they would have reached another World Championship final. I think these 3 in 3 cycles हो जाता उनका. But now they have yeah, to, I think, win 4 out of the next 6 matches. One of them is against New Zealand, and then they have a 5 match series in Australia. And they have a very good record in Australia in recent times. The only team that does well away in Australia. So I'm really looking forward to that series, because if any team can beat Australia in Australia, it's India. And they've shown that in the past. And there's a huge amount of it on the line as well for them to reach the Test Championship final. And Australia also will be aiming to go be completely clear at the top of the table for the final. So that's going to be a mouth-watering series. I think वो अभी जो अगला कैलेंडर आ रहा है एफटीपीज का, दैट इज द वन सीरीज दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. लेट्स सी हाउ दैट वन प्लेज आउट. एंड Australia will be looking to take revenge of the fact that they lost a home series last time around and before that as well. So they have extra motivation, and India have had the extra motivation of reaching the World Test Championship final. It's going to be 100%. it's going to be, I hope it's as good as the previous 2 series we've seen versus India and Australia, because proper Test Yeah, cricket ka jo maza aaya, that was amazing to watch. 100%. But I think we're going to end this podcast on that note. Thank you guys for tuning in. I hope you had as much fun as we did this time around. Congratulations once again to all Pakistanis for sticking this out. And let's give the team a break now. Let's give them some breathing room. Let them enjoy their win. Let us enjoy their win. Hopefully, you enjoyed this. Please make sure to like and subscribe. Our football pod is going to be out tomorrow, hopefully. See you then. Allah Hafiz.